Okay, now we've got section 4. Complete the notes below. Notes को complete करना है. Write one word only. अब पार्ट 4 में वन वर्ड ओनली है तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी पार्ट 3 की निस्बत, ठीक है. और अगर पार्ट 3 में कंफ्यूजिंग हो जाए टेस्ट थोड़ा सा आपका, तो हिम्मत नहीं छोड़नी, पार्ट 4 में आके आप उसको कवर कर सकते हैं. द स्लीपी लिजर्ड. लिजर्ड देखी, कितने कितने लोगों ने लिजर्ड देखी है? छिपकली पंजाबी में क्या कहते हैं? हाँ नहीं, मैं छिपकली की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा, ठीक है. सो छिपकली इज लिजर्ड. स्लीपी लिजर्ड. स्लीपी से क्या पता चलता है? सोई हुई छिपकली, राइट. और उसका आगे नाम दिया हुआ है टिलिक्वा रोगोसा, ये उसका बायोलॉजिकल नेम है. तो आपने परेशान नहीं होना, पार्ट 4 में ना मुझे पता नहीं टिलिक्वा रोगोसा आया था, मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है. ऐसे मासूम बन जाते हैं, भोले भाले बन जाते. लिखा हुआ है स्लीपी लिजर्ड, और लिजर्ड होता है कोड़किल्ली. ये पंजाबी में कोड़किल्ली कहते हैं, ठीक है. तो वो लिजर्ड के बारे में पूरा पैसेज है, और लिजर्ड आप लोगों ने सबने देखी हुई है, ठीक है. ओके, डिस्क्रिप्शन क्या है? दे का क्या मतलब है? लिजर्ड्स. अब ये समझना है, ठीक है. हर सेंटेंस को लिजर्ड जेन में रख के आपने उसको सोचना है. लिजर्ड्स आर कॉमन इन वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया. चलें, शुक्र है यहाँ पे नहीं है, ठीक है. लिजर्ड्स आर ब्राउन बट रिकग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू. कि पूरी छिपकली ब्राउन है, एक चीज उसकी ब्लू है. दैट विल बी योर आंसर. हो सकता है ब्लू आईज. एल्टन जॉन का गाना है, जाके जरा सुनिएगा. ब्लू आईज, वेयर इज गॉन ब्लू आईज, लाइक द डीप ब्लू सी ऑन अ ब्लू ब्लू डे. हाय. ऑलराइट, एनीवेज, अब हमने देखना क्या, वापस इधर आए. ब्लू, ये वो एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने ना, दोस्त था, फौत हो गया, अल्लाह ताला उसे जन्नत पे जगह दे. उसने किसी के लिए कार्ड खरीदा, तो मुझे दिखाया, कहता ये कार्ड मैंने देना है किसी को. मैंने कहा देखा क्या है? उस पर लिखा हुआ था आई एम ब्लू ऊपर, और जब कार्ड खोले तो अंदर लिखा हुआ था विदाउट यू. मैंने कहा हाउ रोमांटिक. ब्लू का क्या मतलब है? सैड. आई एम ब्लू कार्ड पे, और अंदर लिखा हुआ था विदाउट यू. तो मैंने कहा मुझे भी 4-5 ला देना. सो अब हमने क्या देखना है कि उस लिजर्ड की कौन सी चीज का रंग नीला है, ठीक है. ब्लू डैश. Last week we started looking at reptiles, including crocodiles and snakes. Today, I'd like us to have a look at another reptile, the lizard, and in particular, at some studies that have been done on a particular type of lizard whose Latin name is Tiliqua rugosa. This is commonly known as the sleepy lizard because it's quite slow in its movements and spends quite a lot of its time dozing under rocks or lying in the sun. I'll start with a general description. Sleepy lizards live in Western and South Australia, where they're quite common. Unlike European lizards, which are mostly small, green and fast-moving, sleepy lizards are brown, but what's particularly distinctive about them is the colour of their tongue, which is dark blue. In contrast... Okay, colour of their tongue, which is dark blue. Color of their tongue, which is dark blue का मतलब है blue tongue. और tongue के स्पेलिंग क्या होंगे? T-O-N-G. G-U-E. Exactly. T-O-N-G-U-E. अब जिसने टंग के स्पेलिंग गलत लिखे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है. T-O-N-G-U-E. tongue. ओके, आगे चलते हैं. दे आर रिलेटिवली लार्ज, यानी इसका साइज बड़ा है. देयर डाइट कंसिस्ट मेनली ऑफ, क्या खाती है? ज्यादातर. मेनली ऑफ का मतलब है कि ज्यादातर क्या खाती है. हो सकता है इंसेक्ट्स खाती हो, या हो सकता है कुछ चूहे को खा जाती हो, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो डाइट कंसिस्ट मेनली ऑफ. मेनली की जगह पे ऑडियो में आएगा मोस्टली. दे मोस्टली ईट इंसेक्ट्स. आंसर क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स. And they're much bigger than most European lizards. They have quite a varied diet, including insects and even small animals, but they mostly eat plants of varying kinds. Okay, they mostly eat plants, right? Plants, P-L-A-N-T-S. Okay, their main predators. Predator क्या होता है? कोई जानवर जो उसको खाता है, ठीक है. अब for example, zebra का predator क्या होगा? लायन, ठीक है. सो मेन प्रीडेटर्स आर लार्ज बर्ड्स. एक तो परिंदे उसको उठा के ले जाते हैं, जैसे ईगल हो गया, कोई और बर्ड्स के साथ, एंड डैश. अब एक और जानवर है जो उसको खाता है. एक तो लार्ज बर्ड्स,
और दूसरा कौन सा जानवर है, दे विल टेल अस इन दी ऑडियो. अब आंसर जो है लार्ज बर्ड्स के साथ आएगा, और लार्ज बर्ड का शायद वर्ड ना आए. अगर वो बोलते हैं ईगल्स या फिर वो बोलते हैं वल्चर, वल्चर भी एक परिंदा होता है बड़ा, जिसको गिद्ध बोलते हैं, वल्चर, उसके साथ जो भी अगला वर्ड आएगा दैट विल बी योर आंसर. Even though they're quite large and powerful, with strong jaws that can crush beetles and snail shells, they still have quite a few predators. Large birds like cassowaries were one of the main ones in the past, but nowadays they're more likely to be caught and killed by snakes. They are Actually, likely another to be caught and killed by snakes. लार्ज बर्ड की जगह पे कैसलरीज और कुछ ऐसा उसने बोला, ठीक है. दे आर कॉट एंड किल्ड बाय स्नेक्स. आंसर क्या हो जाएगा, स्नेक्स, SNACKS. ये स्नैक्स नहीं होगा, स्नेक्स होगा. नहीं, क्वेश्चन किसी से मैंने किया व्हाट्स योर फेवरेट स्नैक, कहता आई लाइक कोबरा. तो स्नैक और होता है और स्नेक और होता है, ठीक है. SNAKES. और बाद में पता चला वो वाकई कोबरा खाता था, ठीक है. एक स्टूडेंट था मेरा फॉरेन कंट्री से, तो उससे मैंने पूछा था व्हाट्स योर फेवरेट स्नैक, कहता आई लाइक, मजाक कर रहा हूँ, कम हो, सीरियस हो गए. अच्छा, सर के स्टूडेंट ना सब खाते ने, फिर सब खा के 8 बैंड आ जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. Okay, question 34. Navigation study. One study found that lizards can use the dash to help them navigate. अब बेचारी लिजर्ड को तो जीपीएस का नहीं ना पता, उसने तो गूगल, वो क्या होता है, गूगल मैप नहीं लगाना. तो गूगल किस चीज़ को यूज़ करती है अपना रास्ता तलाश करने के लिए? कोई नेचुरल फिनोमिना ही होगा ना, जैसे लोग स्टार्स को देख के रास्ता तलाश करते हैं. सो वन स्टडी, स्टडी का मतलब है रिसर्च, फाउंड दैट लिजर्ड्स कैन यूज. अच्छा, कैन यूज की जगह पे लिखें सी. फॉर एग्जाम्पल, लिजर्ड्स कैन यूज द स्टार्स टू हेल्प देम नेविगेट. ऑडियो में क्या बोलेगा, लिजर्ड्स सी द स्टार्स और लुक एट द स्टार्स टू फाइंड देयर वे. हेल्प देम नेविगेट की जगह पे क्या आ जाएगा, टू फाइंड देयर वे. ओके. One study carried out by Michael Freak at Flinders University investigated the methods of navigation of these lizards. Though they move slowly, they can travel quite long distances. And he found that even if they were taken some distance away from their home territory, they could usually find their way back home as long as they could see the sky. They didn't need any... They can find their way back home as long as they can see the sky. So as long as they can see the sky का क्या मतलब है, lizards can use the sky to help them navigate. Answer क्या हो जाएगा, sky. Good. Question number 35. Observations in the wild. Wild कहते हैं जंगल को. Observations क्या हैं? Observations show that these lizards keep the same. अब keep the same को underline करें. For several years, के कई सालों तक वो एक ही कोई चीज़ रखती हैं, ठीक है. अब वो कौन सी चीज़ है जो एक ही रखती हैं कई सालों तक? हो सकता है घर एक ही रखती हैं कई सालों तक. सो दीज लिजर्ड्स कीप द सेम. अच्छा, सेम का वर्ड जो है उस पर फोकस करना है. आंसर जो है वो सेम के बाद या सेम के सिनोनिम के बाद आएगा, राइट? Observations of these lizards in the wild have also revealed that their mating habits are quite unusual. Unlike most animals, it seems that they're relatively monogamous, returning to the same partner year after year. Okay, returning to the same partner year after year. So answer क्या हो जाएगा? Partner. Okay. Let's go on. What people want, possible reasons to improve the survival of their young, but little dash has been noted between parents and children. अब little dash, अब imagine करें कि lizard और lizard के बच्चे, baby lizards, ठीक है. So little dash has been noted between parents and children, कि parents और children के दरमियान कोई चीज़ है जो बहुत कम है. वो कौन सी चीज़ है जो बहुत कम है, right? And the male and female also stay together for a long time, both before and after the birth of their young. It's quite interesting to think about the possible reasons for this. It could be that it's to do with protecting their young. You'd expect them to have a much better chance of survival if they have both parents around. But in fact, observers have noted that once the babies have hatched out of their eggs, they have hardly any contact with their parents.
So there's not really any evidence to support that idea. They have hardly any contact with their parents. Hardly ever contact with their parents means little contact has been noted between parents and children. And what's the reason? नहीं, कांटेक्ट तो आंसर हो गया ना. लिटिल कांटेक्ट की रीजन क्या हो सकती है? ताकि कोई जानवर उसको उठा ना ले. I've read the same thing in IELTS about rabbits. कि जो रैबिट के बच्चे होते हैं ना, वो जहाँ पे उसने उसको ज़मीन में रखा होता है, वहाँ पे रैबिट नहीं जाता, क्योंकि बाकी के जो जानवर हैं वो देखते हैं कि रैबिट ने यहाँ पे बच्चे दिए हैं, वो आके खा जाते हैं. सो दे मेक लिटिल कॉन्टैक्ट विद देयर चिल्ड्रन. सो सेम थिंग हियर, लिटिल कॉन्टैक्ट हैज़ बीन नोटेड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. और पेरेंट्स में क्या होगा? लिजर्ड. और चिल्ड्रन में क्या होगा? बेबी लिजर्ड्स. ओके, इसको दोबारा सुने. And the male and female also stay together for a long time, both before and after the birth of their young. It's quite interesting to think about the possible reasons for this. It could be that it's to do with protecting their young. You'd expect them to have a much better chance of survival if they have both parents around. But in fact, observers have noted that once the babies have hatched out of their eggs, they have hardly any contact with their parents. So there's not really any evidence to support that idea. Okay, now let's go on. Question number 37. To provide dash for female lizards. Provide को underline करें और female lizard को underline करें. Provide, give, arrange, anything like that. Another suggestion is based on the observation that male lizards in monogamous relationships tend to be bigger and stronger than other males. So maybe the male lizards stay around so they can give the female lizards protection from other males. But again, we're not really sure. They can give protection. Exactly, give protection. So for provide, the word is give. Let's go on. Tracking study. Study means research. A research was carried out using GPS system attached to the dash of the lizards. उन्होंने छोटा सा GPS system lizard के किसी एक body part के साथ लगा दिया. कहाँ पे लगाया होगा? सर पे लगाया होगा. चलें, ठीक है, देख लेते हैं. सर पे लगाना चाहिए. Finally, I'd like to mention another study that involved collecting data by tracking the lizards. I was actually involved in this myself. So we caught some lizards in the wild and we developed a tiny GPS system that would allow us to track them, and we fixed this onto their tails. We fixed this onto their tails. T-A-L-E-S. T-A-I-L-S. वो T-A-L-E tail कहानी को कहते हैं, स्टोरी को, ठीक है? T-A-I-L-S. सिंगुलर लगा दें, प्लूरल लगा दें, दोनों आंसर ठीक हैं. Correct answer is tail. This provided information on the lizard's location. अब this का क्या मतलब है? GPS. Very good. This का मतलब है GPS provided information on lizard's location and even the number of dash taken. एक तो हो गया लोकेशन और दूसरा नंबर ऑफ. अब नंबर को अंडरलाइन करें. नंबर का मतलब है या तो आंसर होगा प्लूरल में, और नंबर की जगह पे वो कोई नंबर यूज कर सकते हैं, 10, 50, 20 या कोई और वर्ड जो नंबर को डिनोट करे, ठीक है? लेट्स सी. और आंसर प्लूरल में होगा नंबर ऑफ डैश टेकन. Then we set the lizards free again, and we were able to track them for 12 days and gather data, not just about their location, but even about how many steps they took during this period. Answer is steps, और नंबर की जगह पे आ गया how many. नंबर की जगह पे क्या आएगा? How many. How many steps it took. Answer is steps. और ये आंसर प्लूरल में ही होना चाहिए क्योंकि इससे पहले how many लगा हुआ है. How many step नहीं होता, how many steps. Okay, question number 40. This may be in order to reduce chances of. Underline करें, reduce chances of. अब reduce का मतलब हो गया minimize. चांस की जगह पे वर्ड आता है risk या कोई और वर्ड, ठीक है? Reduce chances of what? One surprising thing we discovered from this is that there were far fewer meetings between lizards than we expected. It seems that they were actually trying to avoid one another.
So why would that be? Well, again, we have no clear evidence, but one hypothesis is that male lizards can cause quite serious injuries to one another. So maybe this avoidance is a way of preventing this. So, reduce chances of injury. Okay. अच्छा, इससे पहले वाला ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा, इसका लिंक उसके साथ है. सेकेंड लास्ट सेंटेंस पे आइएगा. It appeared that lizards were trying to avoid one another. This may be, this का क्या मतलब है? Avoiding one another, कि वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं. क्यों अवॉइड करते हैं? This may be in order to reduce chances of. इसको दोबारा सुने. One surprising thing we discovered from this is that there were far fewer meetings between lizards than we expected. It seems that they were actually trying to avoid one another. So why would that be? Well, again, we have no clear evidence, but one hypothesis is that male lizards can cause quite serious injuries to one another. Okay, male lizards can cause quite serious injuries to one another. So, reduce chances of injury, that's why they avoid each other. Okay, injury will be the right answer.